Hello everybody, welcome back to the channel. This is your go-to hub for all things education. So in today's video, we are going to discuss the last 1 month strategy for your class 10 board examination. Last video में हमने discuss किया था how should we stay motivated enough for our board examinations. And now there is only 1 month left. You guys are ready to give your 110% for the board examinations. Let's look into the strategy of what books we are going to cover, how much time we are going to devote, and from which resources we are going to prepare for the last 1 month before the board examination starts. आज के वीडियो में हम लोग मेजरली डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स. सो अ क्विक अपडेट इज दैट टेक स्कॉलर्स की यूट्यूब चैनल पे, विच इज आवर सेकंड चैनल वेयर वी आर पोस्टिंग द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स फॉर फ्री फॉर द ईयर ऑफ 2024, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर 2024 बोर्ड examination. According to the latest syllabus, the teachers are one of the best of our country, and one-shot lectures with all the concepts, important questions, each and everything that is required to help you achieve your goal is being uploaded on that channel. Now when we are just 1 month away, it is important to understand from which resources you are going to study for your board examinations. क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि आप YouTube पे जाके एक चैप्टर को 7-8 घंटे देकर कंप्लीट करोगे. Now is the time when you look into the one shot lectures, you get to know the complete chapter in detail in 1 to 1.5 hours. That is from 60 to 90 minutes. A complete chapter is being completed. And once you go through those lectures, you solve the previous year questions, you solve the questions in your NCERT book, and whatever materials we are going to discuss in today's video, that is more than enough to help you score 90 to 95% for your board examinations. So without any further ado, let's jump into the topic, and that was just a quick update about our crash course. Now first, if we talk about science, in science there are 3 subjects majorly: physics, chemistry and biology. Class 10th में आप ये तीनों सब्जेक्ट को एक ही पेपर में दोगे, which is your science paper, right? अब इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इंडिविजुअली आपको हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है. एट फर्स्ट इज यू गो एंड वॉच दोज वन शॉट लेक्चर्स. नो वंस यू नो व्हाट इज देयर इन द एंटायर चैप्टर, यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोर्शन, व्हाट आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, व्हिच आर सम क्वेश्चंस व्हिच इज कमिंग एवरी ईयर. सो यू नो इन डिटेल व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर पेपर. तो 60 to 70% इज गोना कम कॉमन एक्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टॉट. ठीक है, और बाकी 30 to 40% के लिए क्या करेंगे भैया? For that you need to go and solve your NCERT back exercises. अब खोलो अपने NCERT science book, and at the end of the chapter there is exercises. Solve all of them. That is the first task you need to do once you're done watching with the lectures. Now the second thing that you need to do is solve chapter wise previous year questions. Last 5 to 6 years is more than enough. So 2018 से 2023 इन 5 सालों में बोर्ड एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए, you go and solve them. Buy the updated book, the one which has only the topics which is coming in your board examination. Don't go like previous year question books should be bought new. क्योंकि अगर आप 2-3 साल पुराने previous year question book से आप करोगे तो आपको last 1-2 साल का तो questions मिलेंगे नहीं ना उधर पे. So getting the new previous year question book is very important, and go and solve it chapter wise. आप हर एक chapter के अंदर घुसो, उसके आप हर एक topic से सारे questions complete करो. You have 30 days, 10 hours a day, 300 hours is more than enough to go through the complete previous year questions. If you are a student जो already previous year questions को पहले से कर चुका है, I think when you were doing that questions where you were feeling that okay, this question is difficult, you're not able to do that in the first try, I think you must have circle that particular question. तो अगर आप second time attempt करने जा रहे हो, सारे questions करने के time ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, right? तो only solve the marked questions which you were not able to solve in the first go. So you're done with your NCERT back exercises, you're done with the previous year questions, or at first going through the lecture, the one shot lectures upon Tech Scholars channel is super important. Now the last thing that you will do is go and solve 5 sample papers. इस साल के the new syllabus updated जो sample papers release किए CBSE की तरफ से, वो market पे बहुत सारे sample papers की किताब है. अब वहाँ से 5 सैम्पल पेपर्स तो करेंगे, और सीबीएसई ने जो रिलीज किया था वो तो करना ही आपको, ठीक है? तो दैट तो यू विल हैव टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू 5. Now once you get to know
what are the types of questions that is coming in your paper. Once you know what the chapter is about, once you go through the lecture, when you solve the previous 5 to 6 years of questions and you also see कि एक 100 नंबर के पेपर पे, एक 80 नंबर के पेपर पे, एक 70 नंबर के पेपर पे आपको कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए जाएंगे एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए, एंड यू डू दैट 5 to 6 टाइम्स, लाइक बाय सॉल्विंग 5 to 6 सैम्पल पेपर्स, यू डन. बस इतना ही करना है आपको. लास्ट के 30 दिनों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है. यू डोंट नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉट समथिंग दैट यू हैव नॉट डन टिल डेट. ओवर द लास्ट 10 months अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ है कि अच्छा आपने कोई XYZ बुक, रेफरेंस बुक मिस कर दिया एंड यू आर प्लानिंग टू डू इट नाउ, डोंट डू दैट. NCERT, वन शॉट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स, ये 4 चीज़ें इट्स मोर देन एनफ. तो साइंस इज सॉर्टेड, राइट. नेक्स्ट वी कम टू मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स में साल के शुरुआत से जो बच्चे मैथमेटिक्स को सीरियसली पढ़ रहे थे, दे हैव ईदर सॉल्व्ड RS अग्रवाल और दे हैव सॉल्व्ड RD शर्मा. लाइक दैट इज द बेयर मिनिमम. लाइक अगर आप साल की शुरुआत से अच्छे से मेहनत कर रहे थे तो आपने ये तो करा होगा ना, पक्का से करा होगा, राइट. तो when you were doing RS अग्रवाल and RD शर्मा, आपने कुछ questions तो फिर से मार्क किए थे which were more difficult to solve in the first go. So when you now go and solve your RD शर्मा और RS अग्रवाल, only do the selected questions. Number 1. अगर okay, many people be like भैया हमने तो किया ही नहीं, हमने तो RS अग्रवाल RD शर्मा किया ही नहीं था. ठीक है, आपने NCERT तो किया था ना, उसमें आप जाओ, हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे, जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, वो जाके आप फिर से सॉल्व करो. सो योर NCERT क्वेश्चंस आर डन. नेक्स्ट अप जो नंबर 2 आपको करना है, नाउ यू गो एंड वॉच दोज वन शॉट लेक्चर्स. ठीक है ना. वंस यू आर डन विथ योर NCERT एंड यू नो कि अच्छा मैथमेटिक्स में देखो आप पहले कॉन्सेप्ट समझोगे, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द ईयर. सो टिल नाउ यू आर ऑलरेडी नोइंग मोटा मोटा व्हाट इज हैपनिंग इन द चैप्टर. So it is more important to first solve the NCERT book. Now once you solve the NCERT book, now go and watch the lectures up on the Tech Scholars channel. There in detail, we have explained you each and every concept. So ऐसे concepts which you have missed out throughout the year, you will go and find them there, right? We have solved the most important questions in that channel. तो जाओ, पहले तो जाके सब्सक्राइब करो उस चैनल को. And content, the amount of content and the quality of the content that is being delivered on that channel is next level. ठीक है, I am teaching the physics portion और mathematics, biology, chemistry, ये पूरे science और mathematics के जो teachers है ना, वहाँ पे it's one of the best in our country. People who have completed their PhDs, people who have completed their masters are the ones who are teaching there. And I am personally teaching physics. So quality of the teachers and the quality of the lectures that are being delivered, it's something next level. And on internet till date, it's the best crash course that has ever been launched for the class 10th and class 12th board examination students. I can bet on this. It's the best. और इस साल I don't think कोई इतना अच्छा क्वालिटी का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे डाला है. आप जाके देख लो, बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि कोर्सेज बेचना खराब बात है, बट स्टूडेंट्स को जब जरूरत है ना, देन आई एम स्टैंडिंग विथ एवरीबडी ऑफ यू. सो गो एंड चेक आउट. ठीक है ना. इट्स नॉट लाइक कि आप वो नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा, बट इफ यू गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो आपका NCERT बुक हो गया, यू वॉच द वन शॉट लेक्चर्स. द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर chapter wise questions. Now again, when it comes to previous year, it is important कि आप latest previous year question book ही solve करें. 3 साल पहले का आप previous year questions करोगे तो last 3 साल का तो आपको मिलेगा ही नहीं ना. तो 2018 से 2023 तक का ये 5 से 6 साल का जितने भी questions आए chapter wise, go and solve them. Okay? Hardly हर एक chapter के 100 questions होंगे. आप एक दिन बैठोगे, एक चैप्टर्स खत्म. भाई 15 दिन के अंदर पूरा मैथ्स खत्म. आप ये सोचो कि 15 दिन में पूरा मैथ्स खत्म है ना. और जो लोग पहले से मैथ्स किए थे है ना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, सो नाउ यू गाइस गो एंड ओनली अगेन सॉल्व द क्वेश्चंस जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे थे, राइट. सो इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, go and solve all of them. If you're somebody who has solved it earlier, now go and go through only the important questions, the questions where you face difficulties, and again at the end solve 5 sample papers. And CBSE released sample papers is must. Okay, apart from that, solve 5 sample papers. Now when you have done this, you're not left with anything else. You have completed the class 10 science and mathematics. जो भी आ सकता था, जो भी आपने पढ़ा है ना, जो चीज़ें मैंने बताया अभी इस वीडियो में, पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा.
इट्स काइंड ऑफ लाइक आपको विश्वास नहीं होगा ना, राइट? आपको विश्वास नहीं हो रहा है, राइट, कि भैया ने अभी जो जो चीज़ें बताया, अगर हमने ये सब चीज़ें कर लिया, पेपर में 100 on 100 है भाई, इसके बाहर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, राइट? तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं. Everybody be very focused, right? Give your best. Go and watch the one shot lectures. Super important. Previous year questions super important. Mathematics के लिए NCERT भी बहुत important है. अगर आपने RD शर्मा किया है, it's a plus benefit, right? So you're ahead of the competition already. इधर देखो competition like as such competition नहीं है, but then you're just well prepared for your examinations. Okay. So guys, that is it for today's video. I hope you liked it. If you did, make sure you subscribe, like this video, share it with your friends, and I'll meet you soon on Sunday at 10 a.m. Until then, this is Shayundeep signing off. Bye.